Okay, so let's start with the second part of discussion of reasoning section of JIPMAT 2021 paper. So the question is, X was born on 6th of March 2014. Fine. The same year, Independence Day was celebrated on Friday. Now we know that Independence Day is basically 15th of August and year is 2014, and this day was given as Friday. Now we need to find on which day X was born. So basically we need to find the day on this particular date with reference to this. है ना? Now see what we can do is, so we have March, then April, then May, June, July and August. So in March we have already considered these six days. Now the remaining days are 25. We have 31 in total days in March now. So out of which we have already considered this 6 days. So remaining days are 25 now. In April we have 30, then 31, then again 30, then in July we have 39. August में हमें 15 तक ही जाना है केवल. We'll write till 15 only. Right? Now let us count the total of these days. So the total will come out to be there's 55, and if we total all these, we'll get 162. So in total, there is a difference of 162 days. Now you must have studied in calendar कि जब भी हमारे 7 से बड़ा number कोई आता है, we divide it by 7, and we need to check for remainder only. So if we divide it by 7, the remainder will come out to be 1 only. So while moving from 6th of March 2014 to 15th of August 2014, there was a difference of 1 day only, and this is Thursday. This is given as Friday. So this must be Thursday then. So the correct answer to this question is option C, Thursday. Next, in this question, find out how many such pairs of letters are there in the given word, each of which has as many letters between them in the word as in English alphabet. As in, see, to English alphabet, suppose we have a gap of one letter in between A and C. तो यदि यहाँ पर भी हमको A और C के बीच में एक लेटर का गैप मिल जाता है, तो वो एक पेयर हमें काउंट करना है. So this question is like this. Now I will show you an easy, very easy way. In fact, you can say it is a trick to solve such questions. What you need to do is simply write the word. Creative is the word. Now इनकी जो भी alphabetical positions होती हैं, वो आप लिख लीजिए. C comes at position number 3, R at position number 18. Then we have E, which comes at position number 5, A at 1, T at 20, I at 9, V at 22, and E again at 5. Now what you need to do is, you just simply need to start counting from this number. आप फिर से count करना start करिए in forward as well as in backward direction. So we have 3, 4, 5. अब देखिए यहाँ पे 5 पे 5 मिल गया. So we have one such pair as CE. CE में actual में भी alphabetical series में भी एक का ही difference होता है. यहाँ पर भी एक का difference आ रहा है. Right? तो हमने किस तरह से किया था? 3, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और कोई भी लेटर हमें ऐसा नहीं मिल रहा है आगे काउंट करने में. और रिवर्स जाने में 3, then 2, then 1 अभी भी नहीं मिल रहा है. सो हमने सी से सारे पेयर चेक कर लिए हैं. नाउ 18 पे आर पे मूव करते हैं. 18 से 19, 20, 21, 22, 23, 24 एक भी पेयर नहीं मिला. फाइन. उसके बाद हम रिवर्स में चेक करें तो दिस इज 17, 16, 15, 14. इधर भी कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है. आर से भी हमने चेक कर लिया है, कोई भी पेयर नहीं मिला है. नाउ लेट अस मूव टू ई. ई से जब हम काउंट करते हैं तो ई इज एट पोजीशन नंबर 5. तो हम किस तरह से काउंट करेंगे? 6, 7, 8, 9, 10. एक भी लेटर सेम पोजीशन पे नहीं मिल रहा है. देन वी हैव 4, 3, 2, 1. यहाँ पर भी कोई नहीं मिल रहा है. तो हमने ई से भी सारा चेक कर लिया है. नाउ लेट अस मूव टू ए. तो ए का 1 है, तो देन वी हैव 2, 3, 4, 5. और सी यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 मिल गया है. एक और हमें पेयर मिल चुका है व्हिच इज ए. राइट. उसके बाद ए से रिवर्स में हमारे पास कुछ ज्यादा बचा नहीं है. देन लेट्स मूव टू टी. ई इज 20, दिस इज 21, एंड देन वी हैव 22. देखिए यहाँ पे 22 है, यहाँ पे भी 22 था. तो एक और ऐसा पेयर हमें मिल गया है. देन 23, यहाँ से कोई मैच नहीं होगा. 19, 18 एंड 17 वो भी कोई मैच नहीं होगा. टी से भी सारे चेक कर लिए. आई से 9 पे है तो 10, 11 कोई मैच नहीं है. और 8 और 7 रिवर्स काउंटिंग में भी कोई मैच नहीं है. वीई में कोई भी मैच नहीं है. तो इन टोटल वी हैव 3 सच पेयर्स. Now this is a short trick to solve such questions, right? So let's move to question number 19. So in 19,
a sequence of letters, a mixture of letter, word, and symbols is given to us. Now, first of all, what are letters? Letters, you understand, alphabetical letters होते हैं A, B, C, D, E, these are letters. Numbers, 1, 2, 3, these are numbers, and symbols are basically dollar, asterisk, at the rate. These are the signs which we consider as symbols. Right now, how many such digits are there? Digits basically are numbers in the sequence, each of which is immediately preceded as well as followed by a letter. So we need to find such numbers जिनके पहले भी letter हो और बाद में भी letter हो. So first of all, find the number. This is the number, पहले भी letter, आगे भी letter. तो एक ऐसा मिल चुका है हमें. एक और number, पहले भी letter, आगे भी letter. दो ऐसा पेयर मिल चुके हैं. Then we have 3. पहले letter है but आगे letter नहीं है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा. Then we have 5, उसमें भी पहले लेटर नहीं है तो उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा. तो overall we have 2 such pairs. Question number 20. In this question, arrange the given words in meaningful sequence and then choose the most appropriate sequence from amongst the options provided below the question. So the random order is presentation, recommendation, arrival, discussion, and introduction. So the correct order should be, first of all, arrival. सबसे पहले कहीं पे भी अराइव किया जाता है. सेकंड, आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सेकंड शुड बी इंट्रोडक्शन. थर्ड, यू स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन. फोर्थ, वी हैव डिस्कशन ओवर दैट प्रेजेंटेशन, एंड फाइनली कम्स द पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन. So this should be the correct order. It should start with C, then it should be E, then A, then D, and then B. C, E, A, D, B. So C, A, D, B is the first option. So this is the correct answer. Now question number 21, based on data sufficiency. Below a question is given along with two statements, 1 and 2. You have to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Now the question is, A plus B odd hai kya? Is A plus B a odd number? Now first statement is A lies between 8 and 11 and these are integers. So basically ये कह रहे हैं कि 8 can be either 9 or 10. Now केवल A के बारे में पता होने से we cannot comment on the summation of A and B. Now let us take the help of second statement. B lies between 7 and 10, so B can be either 8 or 9. Now see, the addition of A and B can be either odd or it can be even as well. If we take 9 and 9, it can be even. If we take 9 and 8, it will be odd. So we cannot come to a definite conclusion even after using these two statements, right? So the correct answer should be this one. If the data in statement 1 and statement 2 together are not sufficient to answer the question, दोनों का डेटा यूज करने के बावजूद हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं. Next question based on DI, data interpretation. So the question is, we need to study the graph and the graph indicates the cost of production of a firm. So A constitute 49%, B is 39.5%, C is 11%. So the remaining 0.5% must be constituted by D. So this is 0.5% basically. And A is raw material, B is packing material, C is fixed manufacturing, and D is labor cost. Now the total revenue in rupees of all the sector is 120 lakh. So this total, the value of this total pie chart is 120 lakh. If the total labor cost increases to 2 lakh rupees, so initially the labor cost we are talking about D. So initially the labor cost was 0.5% of 12 lakh, right? So it was how much? If we cancel this out, so it was initially 60,000. Now it increases to 2.4 lakhs. So 2,40,000. From 60,000 it becomes 2,40,000. Now what is the percentage increase? We need to check for the percentage increase. So the increment here is of 1,80,000 and that is over 60,000. Initial value was 60,000. So if we talk about the percentage increment, that is of 300%. The correct answer is option B, 300%. Okay. In this question, there are two statements followed by two conclusions, numbered 1 and 2. You have to take the given statement to be true, even if it seems to be at variance with commonly known facts, and then decide whether the conclusion logically follows from the given statement. So basically, this is a question from syllogism. जो भी स्टेटमेंट में दे रखा है आपको ट्रू कंसीडर करना है, आपको खुद का नॉलेज यूज नहीं करना है, जनरल नोन जो फैक्ट्स होते हैं वो यूज नहीं करने हैं. तो स्टेटमेंट इज नो वुमेन कैन वोट.
सो नो वुमेन कैन वोट, सो वुमेन और वोट दोनों के अलग अलग सर्किल बना देते हैं कि कोई भी वुमेन वोट नहीं कर सकती है. नाउ सम वुमेन्स आर पॉलिटिशियन, so there must be an intersection between women and politician. Now see, this is first case. Now second case, it can be like this also. No women can vote, कोई भी women vote नहीं कर सकती है, but जो politician है वो तो vote कर सकते हैं. So we can intersect P and V. So it should be like this. Some women are politician, वो भी हमारा सही हो रहा है, और कुछ politician है वो vote कर भी सकते हैं. यहाँ पर हमने उनको अलग मान लिया था, जबकि वो वोट कर भी सकते नहीं भी कर सकते. Now see, we'll answer, जो भी आंसर होगा we'll answer using both these diagrams. जो भी दोनों में करेक्ट होगा that should be our correct answer. The first conclusion is male politicians can vote. Now we don't have any idea about male politician. यहाँ पर हमें women के बारे में क्या बताया गया है, male politicians कौन है क्या है नहीं पता, तो we cannot conclude this. Some politicians can vote, yes they can, but इस डायग्राम को देखें तो they cannot. तो एक जगह हमारा सही आ रहा है, एक जगह गलत आ रहा है. हमें क्या आंसर देना होता है जो दोनों जगह सही है. तो हम इसे भी कंक्लूड नहीं कर सकते हैं. So the correct answer is if neither conclusion first nor second follow this option. Fine. Now let us move to next question. In this question, a statement is given which is followed by two conclusion. Again, based on conclusion, we have to assume everything in the statement to be true. Then consider the conclusion and then decide which of them logically follows. A statement is fortune favors the brave. जो भी brave होते हैं, fortune उनका favor करता है, उनका तकदीर साथ देता है, right? Now conclusion first. Risks are necessary for success. And second is cowards die many times before they die. और जी, second के बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये irrelevant लग रहा है. cowards के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया हमें, तो उसमें कुछ भी कमेंट हम नहीं कर सकते हैं. Now let us talk about this conclusion number 1. Risks are necessary for success. Now see, if A then B. यदि A होता है तो B जरूर होगा. But in case A नहीं होता है then, तो हम ये नहीं कह सकते कि A नहीं होता तो B नहीं होगा. B हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है. हमें केवल इतना पता है कि A होगा तो B डेफिनेटली होगा. If A then B. बट यदि if A नहीं होता है then, तो उसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं. Now जो ब्रेव है फॉर्च्यून का फेवर करता है. जो भी ब्रेव है फॉर्च्यून फेवर करता है, इसका मतलब उनको सक्सेस मिलती होगी. पर जो ब्रेव नहीं है उनके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं. Now risks are necessary for success. Necessary, ये I think इसकी वजह से यहाँ पे ये भी फॉलो नहीं करेगा. Although जब आप इसको गूगल पे चेक करेंगे और बहुत जगह चेक करेंगे तो ज्यादातर जगह आपको मिलेगा कि दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट. बट इस पर माय ओपिनियन ये आंसर नहीं होना चाहिए. रीजन आई हैव ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. रीजन क्या हो सकता है कि देखिए, हमें ये पता है कि जो भी ब्रेव है, या फिर हम इसको ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि जो भी रिस्क लेते हैं फॉर्च्यून उनका फेवर करता है. फॉर्च्यून फेवर करता है इसका मतलब उनको सक्सेस मिलता है. बट रिस्क एंड नेसेसरी, इसका मतलब जो रिस्क नहीं लेते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. ये हम नहीं कह सकते हैं. हमें ये पता है कि रिस्क लेंगे तो सक्सेसफुल होंगे. इफ रिस्क देन सक्सेस, इफ नॉट रिस्क देन, उसके बारे में हम कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं. So I think the correct answer should be neither one nor two. Next, in this question there are two statements labeled as assertion and reason. An electric bulb, assertion is given as an electric bulb makes a bang when it is broken. Now reason is the air inside the bulb rushes out immediately on breaking. हमें ये बताना है कि whether assertion and reasons are correct, and if they both are correct, is reason the correct explanation of assertion? Right? So first of all, an electric bulb makes a bang when it is broken. Yes, this is correct. जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक बल्ब को टूट जाता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, एक बैंग साउंड प्रोड्यूस होता है. Yes. The reason the air inside the bulb rushes out immediately? No. In fact, there is vacuum inside bulb. बल्ब के अंदर तो कोई भी एयर होता ही नहीं है, राइट? तो एयर डू नॉट रशेस आउटसाइड, जबकि वो अंदर की तरफ जाता है. जैसे ही बल्ब टूटता है तो जो एयर होता है वो अंदर की तरफ रश करता है. दैट इज द रीजन कि वो बैंग साउंड प्रोड्यूस होता है. सो A is true but R is false. The correct answer is option B. A is true but R is false. Next, in a family, each daughter has the same number of brothers as she has sisters. तो एक फैमिली है, ये मैं फादर अज्यूम कर लेता हूँ.
तो इनके चिल्ड्रंस की बात हो रही है कि जितने भी डॉटर हैं, जैसे सपोज इज वन डॉटर, तो उस डॉटर के सेम नंबर ऑफ ब्रदर हैं जितनी उनकी सिस्टर है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि इनकी एक सिस्टर है तो इनके एक ही ब्रदर भी होंगे। नाउ सी, इनको एबीसी नाम दे देते हैं। तो ए की बात करें तो उनकी एक ही सिस्टर है, एक ही ब्रदर है। बी की बात करें तो उनकी एक ही सिस्टर है, एक ही ब्रदर है। तो यहां तक तो सही है। आगे पढ़ते हैं। ईच सन हैज ट्वाइस एज मेनी सिस्टर एज ही हैज ब्रदर। अब सी का तो कोई ब्रदर ही नहीं था, तो जीरो ब्रदर और जीरो का डबल, तो जीरो सिस्टर होनी चाहिए थी, विच इज रॉन्ग। तो हम जब यहाँ पर एक और ब्रदर बनाते हैं डी, नाउ ये वाली कंडीशन तो सही हो जाएगी कि सी का एक ब्रदर है और दो सिस्टर है, द नंबर ऑफ सिस्टर मस्ट बी डबल। बी का एक ब्रदर है और दो सिस्टर है। बट जो पहली वाली कंडीशन थी, ईच डॉटर हैज द सेम नंबर ऑफ ब्रदर्स एज सी सिस्टर, वो रॉन्ग हो जाएगी। नाउ ए हैज वन सिस्टर बट टू ब्रदर्स। तो उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक और ब्रदर और एक और सिस्टर बनाना पड़ेगा। अब एक बार हम चेक करते हैं कि दोनों कंडीशन सही है क्या। इनफैक्ट दोनों अभी भी सही नहीं होंगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दो लेने पड़ेंगे। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू क्यों। देखिए, ई एफ एंड लेट दिस बी जी। अब ई की बात करते हैं, तो ई के थ्री सिस्टर्स एंड थ्री ब्रदर्स हो गए, एंड सेम इज करेक्ट फॉर एफ, ए एंड बी ऑल्सो। एफ के भी तीन सिस्टर तीन ब्रदर हो गए। यहां पर बात करें तो सी के दो ब्रदर एंड फोर सिस्टर्स, जो कि उसके डबल हो रही हैं। बी के भी टू ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स। अब जाके हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब क्वेश्चन इज हाउ मेनी सन्स आर देयर इन द फैमिली। तो इन टोटल वी हैव 3 सन्स। तो करेक्ट आंसर इज 3। Okay. The diagram indicates the number of students taking different subjects. Which subject was taken by largest number of students? Geography, history, mathematics, or science. Now, if we talk about one by one about each of the subjects, so for math, तो जब हम maths की बात कर रहे हैं, तो we have 9. We need to count this 9, 14, 13, 20, 18 and 15. ये सारे maths वाले सर्किल में आ रहे हैं। तो यदि हम इनका टोटल करें तो 9 and 14 is 23, 36, 56, 56 and 15 will make it 71 and 18 is 89. In total we have 89 for maths. तो maths का हमने पूरा काउंट किया है, वो 89 आ रहा है। Similarly, if we count it for other subject, so let us now count for history. So for history, we need to count how many values? This 16 and 14 30, 30 and 13 43, 55, 75, 75 and इधर यहाँ पे 36 आ गया और 13 आ गया। 36 and 13 49, 75 and 49 will make it 124. तो history का 124 हो चुका है। Now let us move to geography. Geography ले लेते हैं। Geography के लिए we need to count all these values of 13 and 12 25, 25 and 20 45, 45 and 27 and 16. So in total for geography we have 90 as the final count, and last we have is science. Science के लिए हम काउंट करने स्टार्ट करते हैं। तो फॉर साइंस क्या क्या वैल्यूज कंसीडर करनी पड़ेंगी? दिस 20, 18, 15, 13, 18, 16 and 19. If we count all these values, it will be 20 and 38. This is 53, 53 and 18, 31, 16 and 19. So in total it would be 190. Now largest number of student history, that is 124. The correct answer is option B. Okay, next question. Based on direction sense, there are 7 villages. E is 2 km west of B. So मैं E को यहाँ बना लेता हूँ। Now E is 2 km west of B. तो B को यहाँ मान लेते हैं। The distance between E and B is 2 km. Next is F is 2 km north of A. अभी हम इसको रिलेट नहीं कर सकते E और B से, तो इसको अभी यूज नहीं करते हैं। Right? C is 1 km west of A. Again इसको भी रिलेट नहीं कर सकते हैं। D is 2 km south of G. G is 2 km east of C. D is exactly in the middle of B and D. तो ये वाला यूज करते हैं, this we have already used, और ये वाला यूज करते हैं, D is exactly in the middle of B and D. तो D यहाँ पर है, तो this is 1, this is 1, और यहाँ पर ये D है, right? तो ये भी हमने यूज कर लिया है। अब हम D से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट उठा लेते हैं। D is 2 km south of G. D is 2 km south of G. तो G के साउथ में है D. D is 2 km south of G. This is 2.
अब G से रिलेटेड उठा सकते हैं हम, G is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C, G is 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ C, तो C must be here, then यहाँ पर C आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। देन वी हैव C is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A, C A से 1 किलोमीटर वेस्ट में है तो A यहाँ पर होंगे, एंड लास्ट इज F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, A से भी 2, अभी थोड़ा डायग्राम में जगह नहीं बचा, बट F is 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ A, F यहाँ पर होंगे, दिस इज 2। नाउ द क्वेश्चन इज we need to find the distance between D and F. Now we need to find this distance. Now see, ये 2 है, ये भी 2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 है तो ये भी 2 होगा, and this distance is 1. So we have got a right angle triangle जिसमें ये distance is 4 and this distance is 1. We need to find the hypotenuse. The hypotenuse is given by perpendicular square plus base square under the root. So this will be under root 70. Right, so this was an easy question, although your diagram थोड़ा properly नहीं मिल पाया, but the correct answer is root 70. Right. Next question. In this question, choose the set of number from the 4 options that is similar to the set. Now the set given to us is 63, 49, and 35. Again, a very easy question. All these numbers are multiple of 7. So this is basically 7 into 9, is 7 into 7, and 7 into 5. So if we take 7 common, so we will be left with 9, 7, and 5. Now 64, 40 and 28, I think only 4 is common. So 4 यदि हम common ले लेते हैं इसमें से तो we will be left with 16, 10 and 7. ये नहीं हो सकता आंसर, right? The next 72, 40 and 24. Again it seems that we can take 8 common here. So 8 common लेते हैं तो 9, 5 and 3. अभी भी नहीं लग रहा. 72, 48 and 24. तो 24 ही common ले लेते हैं तो this will be 3, 2 and 1. ये भी नहीं लग रहा. लास्ट यदि इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं तो we have 9, 7 and 5, which is quite similar. So this is the correct answer, 81, 63 and 45. In this question, a group 3 interrelated words are given. You have to study the relationship between these words. Choose another group with similar relationship from the given options. Pink, red and white. Now we know that when we mix red and white, it gives us pink. So basically first is the combination of second and third. Using the same logic, we can say that option 2 is the correct one. Why? Because when we mix blue and yellow, we get green color. So using the same logic, option B is the correct answer. Next, question number 31. Okay, so the question consists of 2 words that have a certain relationship to each other and are followed by 4 lettered pair of words. Select the lettered pair that has the same relationship as the original pair of words. So first is wind and gale. So wind is basically, wind क्या होता है हमें सभी पता है, सबको पता है. Now gale is basically intense form of wind. आंधी जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं या फिर intense form of wind. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो भी वर्ड है सेकंड उसका इंटेंस फॉर्म है, राइट? तो डिजास्टर का कैलेमिटी नहीं होना चाहिए, जो उसको ज्यादा इंटेंस फॉर्म यदि हम करें, डिस्गस्ट और इन्फैचुएशन तो रिलेटेड नहीं लग रहा, स्टॉर्म और सी भी नहीं लग रहा. लव एंड पैशन. पैशन इज एन इंटेंस फॉर्म ऑफ लव. So this is the correct answer. Okay, in this question, 4 numbers are given. Out of these, 3 are alike in a certain way and 1 is different. तो हमें ये देखना है कि कौन से alike है, कौन से different है. तो हमें we need to find the odd one out. So first is 5, 6, 9, 8. So in 5, 6, 9, 8 क्या हो रहा है, यदि हम इनका टोटल करें तो 5 plus 6 is 11 and 9 20 and 8 is 28. The total is 28. Again in this case 7, 8, 9 and 4, 13 and 15 again is 28. 15 and 12 is 27 and here it is 17 and 11, 28 again. So quite easy question. The answer is 8, 7, 9, 3. The total of the digit is 27. बाकी तीनों में it is 28. Last question of this set. In this question, 4 groups of letters are given. Out of which 3 are alike in a certain way, while 1 is different. We need to find the odd one out. Now again, मैं वापस बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी यदि आप लोग को letters में confusion हो रहा हो, so what you can do is you can simply substitute their position, alphabetical position in place of these letters. Now B comes at position number 2, D at 4, E at 5 and G at 7. Right? इसी तरह से K comes at 11, M at 13, N at 14 and P at 16. Then we have P 16, R it comes at position number 18, S at 19 and U at 21.
Now T at 20, W at 23, X at 24 and Z at 26. यदि हम यहाँ पर देखें तो we have +2, 2 से 4 में +2 हो रहा है, then +1 हो रहा है, then +2 हो रहा है. यहाँ पे +2, +1 और +2 फॉलो कर रहा है. यहाँ पे +2, +1 और +2 फॉलो कर रहा है. यहाँ पर +3, +1 और +2 हो रहा है. It's quite visible. The odd one out is this one. सब में 2 1 2 हो रहा है, इसमें 3 1 2 हो रहा है. So this is the odd one out. So I hope all the questions are clear to you. Thank you so much for watching the video. आप सब AptiMania की preparation कर रहे होंगे. So in case you have any doubt, you can contact us. We will definitely try to help you out. Thank you.